policy or monetary management. In the last class, just say we introduced that topic, that monetary policy deals with money supply, rate of interest and foreign exchange rate, and monetary instruments are quantitative and qualitative. Now quantitative are affecting the overall availability of credit, and qualitative will affect the use of credit or allocation of that credit for a specific sector. Now start with the specific one, liquidity adjustment facility, LAF. Liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility. Briefly explain that. It was introduced by RBI in 2000. Introduced by RBI in 2000, and it is a mechanism through which RBI adjusts. It is a mechanism through which RBI adjusts liquidity in the market. RBI adjusts liquidity in the market. RBI adjusts liquidity in the market against the collateral of government security. Against the collateral of government security. Against the collateral of government security. So repeat, it is a mechanism through which RBI adjusts liquidity in the market against the collateral of government security. So central bank has to adjust liquidity, and to adjust that liquidity, central bank is either sometimes purchasing the government securities or sometimes selling the government securities. When RBI will purchase the government security, in fact RBI is lending money, and when RBI will sell it, in fact RBI is buying that. So liquidity adjustment facility के थ्रू RBI इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहा है. अब एडजस्ट करने के लिए समटाइम्स उसे सिक्योरिटी को बाई करना है और समटाइम्स सिक्योरिटी को सेल करना है. जिस रेट पे उसने लेंड किया कॉमर्शियल बैंक को, लेंड करने का मतलब सेंट्रल बैंक ने उसको लेंड किया है. लेंड किया इसका मतलब सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटी को बाई किया है, और जिस रेट पे वो बाई कर रहा है दैट मींस द रेट एट विच इट इज लेंडिंग, दैट रेट विल बी द रेपो रेट, और जिस रेट पे वो बोरो करेगा दैट विल बी द रिवर्स रेपो. तो LAF के अंदर इनफैक्ट दोनों आ जाएंगे. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से सेंट्रल बैंक इज एडजस्टिंग द लिक्विडिटी, बट समटाइम्स सेंट्रल बैंक हैज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी एंड समटाइम्स सेंट्रल बैंक हैज टू absorb the excess liquidity. So the rate at which it will be done, one rate will be the repo rate, other will be the reverse repo rate. Next sentence. Commercial banks need liquidity. Commercial banks need liquidity. Commercial banks need liquidity to meet their daily mismatch. Commercial bank need liquidity to meet their daily mismatch between requirement and availability. Between requirement and availability. Requirement and availability. Remember, bank has to maintain certain reserve. So on any particular day bank may be having certain reserve, and bank may be required to hold a certain reserve. मतलब उसके पास एक certain amount of cash आ रहा है और बैंक को जो requirement है कैश की वो ज़्यादा है, तो in that condition बैंक will borrow from RBI, और जिस रेट पे RBI ने बैंक को lend कर दिया वो हो गया रेपो रेट. कभी कभी इस बैंक के पास सरप्लस हो जाएगा, तो जब सरप्लस हो गया तो बैंक ने RBI को lend कर दिया, and that will be at a reverse repo rate. Central bank helps commercial bank. Central bank helps commercial bank with a limited amount.
Central bank helps commercial bank with a limited amount on a short term basis, limited amount on a short term basis, and RBI also needs to absorb RBI also needs to absorb extra cash that banks have मतलब ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है, इट इज नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस. नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन कॉमर्शियल बैंक्स बोरो अंडर LAF, when commercial banks borrow under LAF, then they do so at repo rate, and when commercial bank lend under LAF, then they do so at reverse repo rate. So repo at present is 5.15 and reverse repo 4.9. ठीक है, लास्ट क्लास में लिखा हुआ 4.9, 5.15 and reverse repo 4.9. तो याद रखेंगे LAF के अंदर एक एलोकेटेड फंड है जो आप बोरो कर सकते हैं या लेंड कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू बोरो मोर देन, ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, बट उस LAF एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो फंड है, इफ यू वांट टू बोरो मोर देन दैट, देन आल्सो यू कैन बोरो मोर, बट दैट विल बी एट अ पेनल रेट, से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कह रहे हैं. ठीक है, मार्जिन मतलब जो एक्स्ट्रा बोरो करना होगा, उस एक्स्ट्रा बोरोइंग के लिए यू हैव टू पे अ separate rate, and that rate will be basically the bank rate. ठीक है, तो marginal standing facility will be the next term, MSF, marginal standing facility. Introduced in 2011 to enable commercial bank to borrow from RBI at a penal rate when the amount allotted under LAF is exhausted. Amount allotted under LAF is exhausted. So the aim is to make more liquidity available. If banks are ready to pay higher interest rate,
Generally these borrowings are at bank rate. These borrowings are at bank rate. These borrowings are at bank rate. That is the rate at which RBI used to lend long term. RBI used to lend long term to commercial banks. याद रखिएगा, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग है और बैंक रेट फॉर लॉन्ग टर्म. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक सर्टेन अमाउंट लेंड होगा. इफ यू वांट टू बोरो मोर देन दैट, देन यू विल हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बट दैट विल बी डन एट अ पेनल रेट. ऑब्वियसली अगर वो पेनल रेट है, देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन रेपो रेट. ठीक है, वो हमेशा रेपो रेट से क्या आएगा, ज्यादा आएगा. तो रेपो रेट से ज्यादा बैंक रेट इज 5.4. ठीक है, ये 1 जनवरी 2020 के 4 जनवरी 2020 के रेट के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये बाई मंथली मीटिंग होती रहेगी. तो इनकेस अगर आप 30 से पहले लिख रहे हैं तो उससे पहले वाला डेटा कंफर्म कर लेंगे. ठीक है, वो बाई मंथली चेंज हो सकता है. ये इन बिटवीन भी रिक्वायरमेंट पढ़ने पे चेंज होता है, बट नॉर्मली वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ही चेंज होगा. तो यहाँ जो लिख रहे हैं वो 4 जनवरी 2020 के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप सारा इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं. सो मार्च, ठीक है, फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो टेबल है, उस टेबल के अंदर है 4 जनवरी 2020 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR वो स्टैटिक है, इसलिए ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, एंड SLR माइनर चेंज 8.5 to 8.25. ठीक है. So this is the rate at which RBI lending, this is the rate at which RBI in fact is borrowing. ये दोनों जो फॉर्म है, रेपो और रिवर्स रेपो, ये LAF का पार्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के पार्ट है. इसलिए कहीं कहीं लिखा होता है LAF कॉरिडोर. LAF कॉरिडोर एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है. दैट इज द LAF कॉरिडोर, द रेट एट विच यू आर लेंडिंग एंड द रेट एट विच यू आर borrowing. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिख रखा है. CRR क्लियर है. CRR was the proportion of total deposit that bank has to keep with RBI in the form of cash, and its value will range between 3 to 15%. And SLR is the proportion of total deposit that bank has to maintain with itself in the form of liquid asset, and its value is 18.25. SLR, CRR, bank rate, if they are reduced, then money supply in the economy will increase. Money supply in the economy will increase when RBI will reduce bank rate or CRR or SLR. So recessionary condition में it is expected that central bank will increase money supply. So for increasing money supply, central bank is expected to reduce these rates. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए है, जो ज़्यादातर जो टर्म अभी तक यूज किए जा रहे हैं उसके अंदर बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ठीक है, नाउ राइट सम मॉनेटरी एग्रीगेट्स.
monetary aggregates. One is the concept of M1, also known as narrow money. This money in fact only includes currency in circulation and demand deposit. Currency in circulation and demand deposit and other deposit with RBI, but वो nominal होता है. M1 is basically narrow money, and when we consider M3, then it will be M1 plus. Demand deposit will include only saving deposit and the current account deposit, which can be withdrawn on demand. But what you cannot withdraw on demand is your fixed deposit, term deposit. When you add that term deposit also in M1, then it becomes M3. So M3 is broad money. M3 is broad money. And for 2018-19 and 2019-20, M1 growth rate was 13.6, 12.5, and broad money 10.5, 10.4. Remember this money growth rate. Money growth rate. ब्रॉड मनी के टर्म में ज़्यादा इंटरप्रेट किया जाता है. जब आपसे नॉर्मल मनी ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है विदाउट मेंशनिंग, देन बेसिकली द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू M3. मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज M3. सो मनी ग्रोथ रेट इज ऑफ 10.4. GDP growth rate of, so by that we can also infer something about the inflation rate. Usually inflation rate will be equal to, approximately equal to, not exactly mathematical नहीं होता. तो जो inflation का rate होगा that will be equal to money growth rate minus the GDP growth rate. If the money growth rate and GDP growth rate are equal, then inflation rate will be almost close to zero. So approximately inflation rate is always equal to money growth rate minus the output growth rate. Money growth rate minus the output growth rate. वो relationship आप प्योर इकोनॉमिक्स वाले पेपर के अंदर जब आप करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में रिलेट होता है. एम बी इक्वल टू पी वाई के फॉर्मेट. सो दिस इज बेसिकली एन अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, प्राइस एंड आउटपुट. सो इफ आई कंसिडर वेलोसिटी एज कांस्टेंट, देन ग्रोथ ऑफ मनी विल बी इक्वल टू ग्रोथ ऑफ प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन. और ग्रोथ रेट लेते हैं तो इनफैक्ट लॉग हो गया. लॉग लेने की वजह से यहाँ साइन प्लस आ जाता है. सो ग्रोथ रेट ऑफ मनी, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस इज इन्फ्लेशन रेट ऑफ पीरियड टी, एंड प्लस दिस विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट जी बाई टी. देयरफॉर इन्फ्लेशन रेट इज सेड टू बी डिफरेंस बिटवीन मनी ग्रोथ रेट एंड आउटपुट ग्रोथ रेट. Inflation rate is said to be the difference between money growth rate and the output growth rate. So this is the growth rate of money, and you know the growth rate of output, so approximately growth rate of price can be measured. डेटा को इंटरप्रेट करना सीखिएगा. अगर आपको एक डेटा मालूम है, दूसरा डेटा मालूम है, तो थर्ड डेटा आप अप्रोक्सीमेटली क्लोज वैल्यू डायरेक्ट कर सकते हैं. मॉनेटरी एग्रीमेंट का, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का, हाँ, ये नॉर्मल सोर्स इसका आरबीआई होगा. आरबीआई मतलब जो एग्रीगेट्स आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली द मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, एंड हु विल बी मेजरिंग दैट? सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक इज प्रोवाइडिंग दोज मॉनेटरी एग्रीगेट्स. ठीक है, नेक्स्ट. ब्रॉड मनी में पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स क्यों नहीं ऐड? नहीं, वो लिक्विडिटी के अरेंजमेंट के फॉर्म में है. पोस्ट ऑफिस डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं आता. डायरेक्टली, इनडायरेक्टली है, बट वो डायरेक्टली नहीं है.
तो M1 में और M3 के अंदर हमने पोस्ट ऑफिस वाला नहीं ले रखा, M2 में लिया है और M4 में लिया है। और second important thing is these monetary aggregates M1, M2, M3, M4 are in fact arranged in the descending order of liquidity के descending order में, मतलब M4 is most liquid asset, M3 will be less liquid and M4 will be less. तो M1, M2, M3, M4 ये liquidity के arrangement में है। और liquidity का मतलब the ease with which you can convert it into cash. So if it is demand deposit, you can easily withdraw, but if it is your fixed deposit, it can be withdrawn, but you will have to bear some cost or there will be some inconvenience as well. So in terms of liquidity, plus if it is deposit in the post office में जो money deposit है उसकी liquidity और भी कम होती है। तो M1 और M3 के अंदर जो बैंक वाले एग्रीगेट्स आ जाते हैं और M2 और M3 में हमने बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ले लिया। ठीक है, वो कंसेप्ट ले रहे हैं। M1, M2, M3, M4 आर बेसिकली अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, राइट ऑन दैट टाइप। M1, M2, M3, M4, M1, M2, M3, M4 are arranged in descending order of liquidity, are arranged in descending order of liquidity, descending order of liquidity, descending order of liquidity. After that next information is about money multiplier. Money multiplier, money multiplier. Money multiplier is in fact the ratio between ordinary money and high powered money. Ordinary money or high powered money. High powered money is also known as base money, sometimes also called as reserve money. So M is in fact monetary aggregates, but M में भी ये actual में M3 का aggregate है, M3 है, और H is referred as the reserve money. So money multiplier is M3 upon H, और H को कहीं के M0 भी लिखा हुआ है, ठीक है, M0, तो वो आपका रिजर्व मनी है। मैं एक्सप्लेन कर दें दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हेन आई सेड H, you can write it by H or by M0, or it can also be written as base money B. H is in fact money created by central bank and government, and it is held by public and bank. Public will hold it in the form of currency and bank will hold it in the form of reserve. तो high powered money में currency और reserve आ रहे हैं। And when you write M, then M includes, M में in fact क्या include किया हमने, ये M3 अगर लिख रहे हैं तो उसमें क्या included हो गया, वो M1 ऑलरेडी आ गया प्लस टर्म डिपॉजिट भी आ गया, तो उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन भी है प्लस द टोटल डिपॉजिट, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द टोटल डिपॉजिट। So if central bank will be, if I say that the value of money multiplier is let us say 4 or 5, तो एक्चुअल इसका मतलब होता है कि if central bank will be creating H by 100, then money supply in the economy will let us say increase by 400, the value of multiplier is 4, it get multiplied by that number. So the value of money multiplier actually determines what, अगर आप इस मनी मल्टीप्लायर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या निकलता है, money multiplier times H will be equal to what, M3. So any change in H will cause change in money supply by how much, money multiplier times. So greater is the multiplier, more will be the change in money supply, less will be the multiplier, less will be the change in money supply. And the current value of multiplier, current value of multiplier has been written as approximately 5.5, exact value
अप्रोक्सीमेटली 5.5। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर गिवन नहीं है, ये इस टेबल में गिवन है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू, so recently there has been a dip, but this number is close to 5.5, so approximately 5.5 है। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 5.5 है, इसका मतलब इस नंबर को इंटरप्रेट कैसे करेंगे? इफ सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज रिजर्व मनी बाय 1 यूनिट, then the broad money will increase by 5.5 times. ठीक है, ट्रेंड वगैरह लिखना है तो उसका स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना। between mid 1990s to 2016-17, mid 1990s to 2016-17, the money multiplier was mostly increasing. Money multiplier was mostly increasing. Money multiplier was mostly increasing. However, it has been declining since 2017-18. It has been declining since 2017-18. सेवनटीन 18। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इनफैक्ट फॉर बैंकिंग सेक्टर। Related to banking sector, it provides certain information about gross NPA. Add on first, gross NPA that is NPA as a percentage of gross advance. That is NPA as a percentage of gross advance. NPA as a percentage of gross advance remained flat at 9.3%. Remained flat at 9.3% in end September 2019. September 2019. Next, the stressed advances. Stressed advances ratio, stress advance ratio of scheduled commercial bank also remained flat at 9.7%. Also remained flat at 9.7%. स्ट्रेस एडवांस में आप एनपीए भी ले लेते हैं प्लस लोन वेवर एंड लोन राइट ऑफ। गवर्नमेंट इज राइटिंग ऑफ सम लोन और लोन वेवर है, फार्म लोन वेवर है, यू आर इंक्लूडिंग दोज इनटू एनपीए, देन ऑल विल क्लब टुगेदर आर स्ट्रेस एडवांसेस। नेक्स्ट, जीएनपीए of public sector bank, GNPA of public sector bank, GNPA of public sector bank
is 12.3%, is 12.3%, while stress advance increased from 12.7% to 12.9%. 12.9%. ये March 2019 or September 2019 in that first half. 12.7% to 12.9%. 12.7% was in March 2019 and 12.9% is in September 2019. Next, capital to risk weighted asset ratio. Capital to risk weighted asset ratio, CRAR. Capital to risk weighted asset ratio of scheduled commercial bank increased from 14.3% to 15.1%. 14.3% to 15.1% between March 2019 to September 2019. September 2019. Next, weighted average lending rate. Weighted average lending rate, WALR. Weighted average lending rate of scheduled commercial bank has not declined at all. Despite reduction of repo rate. So what is basically happening that this weighted average lending rate, that is the rate at which banks are lending to public or to firms for investment purpose. That weighted average lending rate is not declining, but what has reduced is, so the rate at which banks are borrowing, that rate has gone down, but the rate at which they are passing on that loan to the customer, they have not reduced that rate. So that weighted average lending rate has not reduced while the repo rate has reduced. That means the effect has not been passed on, and it also indicate a weak monetary transmission. स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, आरबीआई ने कोई पॉलिसी चेंज अगर की है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा, बट इम्पैक्ट किसके थ्रू होना है, बैंक के थ्रू होना है. बट इफ बैंक्स आर नॉट रिड्यूसिंग दैट, व्हाई बैंक्स कुड नॉट बी रिड्यूसिंग दैट रेट? They are basically risk aversion. So if there is greater NPA, plus we can also consider from the demand side also, banks can lend only when there are some borrower. तो अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो बैंक की जो लेंडिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो देयर इज ऑलवेज अ टू साइड, वन फ्रॉम द डिमांड साइड, अदर फ्रॉम द सप्लाई साइड. सो इवन इफ बैंक्स कुड बी विलिंग टू लेंड, बट इफ द इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू borrow, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होगा then they do not borrow, and if they are not borrowing then banks are unable to lend. So the gap between this repo rate and WAR, the gap between repo and WAR is basically increasing, and this is known as credit spread.
Next statement. Credit spread. Credit spread, underline that. क्रेडिट स्प्रेड मतलब इस तरीके के जहां जहां न्यू वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे सर्वे में जो नॉर्मली कन्वेंशनली पहले यूज नहीं करते थे, उस तरीके का वर्ड्स पे ध्यान देना. क्रेडिट स्प्रेड एक्चुअल में किसका गैप होगा? रेपो और WAR का गैप होगा. तो अगर रेपो डिक्रीज हो रहा है और WAR डिक्रीज नहीं हो रहा है, द गैप विल बी इंक्रीजिंग. द क्रेडिट स्प्रेड which is difference between repo rate and WALR, difference between repo rate and WALR is at the highest level, is at the highest level in this decade. The WALR on outstanding loan, WALR on outstanding loan of scheduled commercial bank is 525 basis point. इसको आप 5.25% में याद रखें, ज़्यादा बेटर है. 525 बेसिस पॉइंट या जस्ट ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करके 5.25 हायर देन द रेपो रेट. 5.25 higher than the repo rate, suggesting that there has been no transmission, of cut in repo rate. There has been no transmission of the cut in repo rate to lending rate of banks, in 2019. ठीक है, उस कंटेक्स्ट में आप रिलेट कर सकते हो यस्टरडे प्रेस कॉन्फ्रेंस. फाइनेंस मिनिस्टर सेड बेसिकली व्हाट बैंक्स आर नॉट डूइंग, RBI is doing the role, but banks are not reducing the WALR. ये वो reduce नहीं कर रहे, मतलब the rate at which. So if I say that there is a gap of 5.25, it means actually what is the repo rate? 5.15, and the gap is 5.25. So in fact it is banks are lending at what rate? 5.25 का गैप आ गया, तो 10.4 approximately. So banks are lending at a rate of 10.4 on an average, and they are borrowing from RBI at a rate of 5.15. So that spread is of 5.25. So this is the credit spread chart. ठीक है, ये क्रेडिट स्प्रेड चार्ट है. आपको जो बाकी इंफॉर्मेशन से मतलब ये दिस रीसेंट फेज, दिस गैप, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.25 के आसपास. ठीक है, 5 और 5.5. ठीक है, ये क्रेडिट स्प्रेड जितना ज़्यादा हो गया इसका मतलब बैंक्स का जो रेट है वो हायर होगा, और ऑब्वियसली बैंक्स के जो क्रेडिट का ग्रोथ होगा वो काफ़ी कम होगा. क्रेडिट ग्रोथ विल बी वेरी लो.
इससे फॉर्म का जो टेबल है उसमें आपको आपके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में ये होता है, अननेसेसरी बाकी पास का टेंड नहीं करना है। टर्म का मतलब क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, और पास्ट में क्या हुआ है, रिसेंट पास्ट में। टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मतलब लेट अस से क्रेडिट स्प्रेड पे अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्रेडिट स्प्रेड, स्टेटमेंट में पहले वो हो गया। अगर आपको वो मीनिंग मालूम है, फिर उसका इम्प्लीकेशन मालूम है, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, it basically suggests what, suggesting that there has been no transmission। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, और एग्जैक्ट क्रेडिट स्प्रेड का अमाउंट। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। Despite a decrease in policy rate, despite a decrease in policy rate, despite a decrease in policy rate, the credit growth in the economy, the credit growth in the economy has been declining. The credit growth in the economy has been declining since the beginning of this year. Since the beginning of 2019 rather लिखो, since the beginning of 2019. Bank credit growth moderated from 12.9% in April 2019 to 7.1% in December 2019. So credit growth rate was earlier 12.9 year-to-year basis पे, and it is only 7.1% in December 2019. मतलब ये इंफॉर्मेशन आप रिलेट करेंगे, ईयर टू ईयर है, December 2019 will be compared with December 2018, and this is from April 2019 to April 2018. The main contributor to this slowdown has been a negative growth of credit to MSME, and textile, MSME sector and textile. ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस से पे रखेंगे, रेस्ट इज इनफैक्ट डेटा। So it is a growth in industry-wise deployment of bank credit by the major sectors. So one is in fact non-food credit, industry, micro and small, medium, large, textile and infrastructure, जो credit का amount है, and that credit amount last information के accordingly जो नॉन फूड क्रेडिट है वो लास्ट वाला पार्ट भी कर लिए, नेगेटिव नंबर्स देख लीजिए, मतलब जहाँ पे स्लो डाउन है, मेजर कंट्रीब्यूटर इन दैट स्लो डाउन,
Major contributor in that slowdown is micro and small. This is negative 0.1. Medium is negative 2.4 and textile is minus 6.1. ठीक है, तो क्रेडिट ग्रोथ अगर रिड्यूस हो रहा है तो उसके पीछे ये सेक्टर, मतलब इस सेक्टर की जो लेंडिंग है वो कम हो रही है, एंड दैट आल्सो इंडिकेट एमएसएमई सेक्टर का अगर ग्रोथ नेगेटिव है, इसका मतलब पहले जितना लेंडिंग हो रही थी उससे भी अब कम हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मीन्स बेसिकली वेरी और नो ग्रोथ इन द इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई सेक्टर, so that stagnant growth of the industry is also affected by this. ठीक है, वो इंडस्ट्री वाले चार्ट टेबल के अंदर में मिलेगा आपको. इंडस्ट्री वाले टेबल में इसका ग्रोथ रेट काफी लोअर है. ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इज लेस देन 3%. जीडीपी ग्रोथ रेट अब लेस, Q3 का इंफॉर्मेशन आज के पेपर में है 4.7%. so that 4.7% is for the economy. So in that obviously the service sector will be contributing the maximum. So the growth of industry is very nominal and within that industry MSME sector. तो ये सारे जो अलग अलग डेटा है वो रीइंफोर्स कर रहे हैं. ठीक है, जो जहाँ नेगेटिव ग्रोथ के टेरिटरी है वो वाला सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा. एंड रेस्ट इज अ नॉन फूड क्रेडिट, इट हैज गॉन अप 7.2, इंडस्ट्री ओवरऑल 2.4. क्या सेम इंफॉर्मेशन है, ये सब टेबल फॉर्म में जो गिवन है, जो आपने लिख रखा है. तो क्वेश्चन के लिए आपको ये वैल्यू पता नहीं ये रिड्यूस कितने से हुआ है और करंट वैल्यू कितनी है. सो इट वाज 7.1. ठीक है, ये नंबर यहाँ 7.1. दिस इज फॉर अ सेक्टोरल बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट. सेक्टोरल बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट है, मतलब इंडस्ट्री, सर्विस और पर्सनल लोन के लिए. इंडस्ट्री, सर्विस एंड पर्सनल लोन. For industry it is the lower one. Personal loan is this blue line and service sector is this declining. So steep decline we find in service sector. Personal loan is more or less but declining है, but steep declining है. And industry there was increase but recent fall. ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रेंड वाइज क्वेश्चन है तो एक्सपेक्टेड होगा कि आप अगर रेफर कर रहे हैं इस टेबल को तो एक बार टेबुलर फॉर्म में, मतलब इंफॉर्मेशन जो लिखा है वो तो याद करना ही है. ट्रेंड के फॉर्म में जस्ट ऑब्जर्व दैट चार्ट. ठीक है, आफ्टर दैट राइट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर विद इन सेम चैप्टर. इंश्योरेंस सेक्टर. Internationally, the potential and performance of insurance sector, are generally assessed. Performance of insurance sector are generally assessed on the basis of two parameters. Assessed on the basis of two parameters. That is insurance penetration and insurance density. Insurance penetration and insurance density. ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए जो ओवरऑल इंश्योरेंस का प्रीमियम है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, दैट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन.
as a percentage of GDP, and insurance density is overall insurance premium divided by population, मतलब per capita. मीनिंग ऑफ टर्म क्लियर. पेनिट्रेशन में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लेना है, डेंसिटी में पर कैपिटा लेना है, पॉपुलेशन से डिवाइड किया. बिलो दैट इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया, इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया, इंश्योरेंस डेंसिटी इन इंडिया was 11.5 $11.5 in 2001, and it has increased to $74 in 2018. Insurance density 2001 it was $11.5 so per person insurance, and now $74 in 2018. ठीक है, इसमें फर्दर ब्रेकअप गिवन है बट आई डोंट थिंक ज़्यादा यूज लाइफ और नॉन लाइफ के लिए. तो फॉर अगर लिखना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस इज 55 आउट ऑफ दैट 74 एंड नॉन लाइफ इज 19. लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ के लिए, जनरल इंश्योरेंस जितने भी होंगे. इंश्योरेंस डेंसिटी है, ठीक है. कंपैरेटिव स्टडी के लिए इंश्योरेंस डेंसिटी फॉर चाइना इज 406 $. In Malaysia it is 518. Thailand 385. तो समटाइम्स कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपको अलग कंट्री का इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट, सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस डेंसिटी. नेक्स्ट स्लाइड फॉर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. Penetration for life insurance. Penetration for life insurance. Penetration for life insurance has declined. Has declined from 2011. From 2011, whereas for now non-life insurance. Whereas for non-life insurance, it has increased considerably. It has increased considerably. It has increased considerably. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रखिएगा. लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हुआ है 2018 के कंपैरिजन में, मतलब जीडीपी का लेस शेयर, और नॉन लाइफ के लिए वो इंक्रीज हो रहा है. लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रिड्यूस हुआ है, और नॉन लाइफ इट हैज इंक्रीज. एंड फॉर 2018 it is 2.74% for life insurance, 2.74% 2018, 2.7% for life insurance, and
0.97%. 0.97% for non-life. For non-life. ठीक है, डेटा क्लियर हो रहा है. 2.75 is what? 2.75% of GDP is life insurance premium, and for non-life insurance premium it is 0.97. But from 2011 onwards, life insurance penetration has reduced, मतलब as a percentage it has gone down. Trend के लिए see this table number 8 and 9. Insurance penetration 2011, 12, 13, 14 information 3.4, 3.17, 3.1, 2.6 and this. So insurance penetration has reduced for life insurance. ठीक है, density has increased, and for non-life insurance penetration has increased as well as density has increased. ठीक है, यहां से भी कुछ अलग, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछी जा रही है. ट्रेंड. सो व्हाट इज हेयर एंड व्हाट इज हियर डिफरेंस हियर? फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस penetration and density both increases, but for life insurance penetration decreases and density increases. ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए वो स्टेटमेंट लिखो नीचे. For non-life insurance penetration and density both has increased gradually. However, for life insurance penetration has reduced, but density has increased. Clear for insurance sector ये information है. Then move to the NBFCs, non-banking financial sector. NBFC. After growing very fast in 2017-18, and in the first half of 2018-19, after growing very fast in 2017-18 and in the first half of 2018-19, after comma, this sector has deaccelerated sharply. Since then. The growth of loans from NBFCs declined from 27.6%
in September 18 to 21.6%, in December 18 to 9.9%, in September 19 9.9% in September 19. So from loan from NBFC is growing only at a rate of 9.9%. Next paragraph. As against the regulatory requirement, as against the regulatory requirement of 15%, regulatory requirement of 15%, the capital to risk weighted asset ratio CRAR, as against the regulatory requirement of 15%, the capital to risk weighted asset ratio CRAR of NBFC sector, capital to risk weighted asset ratio, capital to risk weighted asset ratio of NBFC sector remained at 19.5% in March 2019. In March 2019, the gross NPA, the gross NPA of NBFC sector, gross NPA of NBFC sector increased from 5.8% in March 2018, 5.8% in March 2018 to 6.1% in March 2019, 6.1% in March 2019 and 6.3% in September 2019. September 2019. So that GNPA from NBFC is increasing, or mandatory CRAR is 15, but it is actually more than that. So there is greater element of a risk. It is basically indicating how much is your risky lending. So risky lending is basically more than what has been regulated. ठीक है, और वो आपको अलग अलग जो केसेस है उसके अकॉर्डिंगली भी रिलेट हो रहे हैं. ILFC, तो ILFC के स्टोरी पे नहीं आपको एक्सप्लेन करना, बट बेसिकली वो लेंडिंग है NBFC के थ्रू. वहाँ जो क्राइसिस है उस तरीके की क्राइसिस की वजह से उसका GNPA इंक्रीज हो रहा है. तो एक पर्टिकुलर टेबल गिवन है बॉक्स 2. आई डोंट थिंक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा यूज है. फॉर सुपरविजन ऑफ NBFC RBI हैज़ रेगुलेटेड सर्टेन एप्स. रेगुलेशन के लिए पर्टिकुलर कंप्लीट टेबल गिवन है. ठीक है. अमेंडमेंट ऑफ द RBI Act 1934 टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ NBFC सेक्टर, वेस्टिंग एडिशनल पावर टू द RBI. व्हाट आर द एडिशनल पावर्स वेस्टेड टू द RBI? अगर स्पेसिफिकली आप NBFC पे डिटेल कर रहे हैं देन यू कैन रेफर टू बॉक्स 2. अरेस्ट जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग लिख लिया. ठीक है. देन यू कैन डेवलपमेंट इन द कैपिटल मार्केट. वो कैपिटल मार्केट ज़्यादा यूजफुल सेक्शन नहीं है. One term has been used in that is new term is bilateral netting and multilateral netting. Bilateral netting. ठीक है. सेपरेट या न्यू टर्म्स आ जाए, उस टर्म्स से फेमिलियरिटी इंपॉर्टेंट है. बायलैटरल नेटिंग.
It enables, it is basically an agreement. Bilateral netting is an agreement. It enables two counterparties. It enables two counterparties in a financial contract. It enables two counterparties in a financial contract to offset claims. To offset claims against each other to determine a single net payment obligation. To determine a single net payment obligation. Net payment obligation due from one counterparty to the other. One counterparty to the other. One counterparty to the other. So if there are two counterparties A and B, there will be some transactions here. A has to make payment for X number of amount, another bill of Y number of amount, third bill, and B has to make certain reverse transactions. So rather than allowing all transactions, just calculate the net, और जो net है उसका से ट्रांसफर हो. So that is known as bilateral. और जब multilateral करेंगे तो अदर पर्सन भी आ गए, तो ये multilateral netting में है. Next, a multilateral netting agreement. Multilateral netting agreement. मल्टीलैटरल एक्चुअल में जैसे क्लियरिंग हाउस का काम होता है आरबीआई का. चेक आप डिपॉजिट राइट करते हो, एक्स बैंक का, वो डिपॉजिट होता है दूसरे बैंक में, तो एक बैंक का दूसरे बैंक से क्लेम है, दूसरे बैंक का थर्ड बैंक से क्लेम है, तो क्लियरिंग हाउस का जैसे फंक्शन होता है वैसे ये मल्टीलैटरल नेटिंग है. A multilateral netting agreement allows counterparties to offset claims against each other through a central counterparty in a clearing house. ठीक है, so these were the terms and facts used in that chapter number 4, monetary management. Now move to another chapter. So far you have explained that fiscal state of economy and fiscal development, and this was monetary development. So 3 chapters. Fourth is important chapter will be the external sector. In survey it is chapter number 3. External sector. Next page. External sector will be important in the sense it will be talking about what is the current account deficit, balance of payment position, foreign exchange reserve, composition of trade, direction of trade, किस कंट्री के साथ ट्रेड सरप्लस है, किस कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है, एंड हाउ मच इज दैट सरप्लस एंड डेफिसिट. योर एक्सटर्नल borrowing, external liabilities, all will be included in this external sector chapter. Now important fact from this external sector, basic point clear है, because when we explain balance of payment, and as you know balance of payment is a systematic record, and it records all economic transactions between resident of one country and resident of rest of world,
and all those transactions, there will be some transaction which will be recorded in the receipt side and some in the payment side. For example, export of goods. So if it is export of goods, it will be receipts. Import of goods, payments. You can call it merchandise. ठीक है, ये यहाँ लिखा होगा merchandise export, merchandise import. Then you add export of services, export of services. Here import of services. ये in fact balance of trade हो गया. Then you add transfers. After that you make investment, income received, or right side investment income paid. All these four will form the current account. So when I say current account is in deficit, current account deficit is actually meaning that payment, all four items are more than the receipts. In that current account you add capital account, and after adding that capital account transaction, then the BOP gets complete. So the current account is basically showing all informations. Informations are, again, you don't have to remember in terms of absolute amount. Better way is to always explain in terms of the percentage of GDP. तो in terms of percentage of GDP है. तो याद रखिएगा, जब आप ये करंट अकाउंट का टेबल लिख रहे हैं तो उसमें गुड्स भी आ जाएगा, सर्विसेज भी है, ट्रांसफर्स भी हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम भी है. So it may be possible that there is huge deficit in the goods or merchandise, but it is offset by services surplus, so that the overall CAD will be lower. अगर आप ओनली गुड्स का देखेंगे तो गैप ज़्यादा है, सर्विसेज से वो ऑफसेट हो गया, ट्रांसफर से वो ऑफसेट हो गया, ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगी. बट यू मस्ट नो द ब्रेकअप ऑफ गुड्स, दैट इज मर्चेंडाइज और सेपरेटली और सर्विस सेक्टर सेपरेटली एंड करंट अकाउंट टुगेदर. So in that context, write down major facts. Current account deficit, CAD. Current account deficit as a ratio of GDP, as a ratio of GDP. Current account deficit as a ratio of GDP is 1.5%. 1.5% in H1 2019-20. H1 2019-20. Current account deficit in currently is 1.5. So your current account deficit, if you want to write trend, then 2009 to 14, it was 3.3. 14 to 19, 1.4. 18-19, 2.1. and 19-20 H1 is 1.5. Currently it is 1.5. So you can say gradually it has reduced. Gradually it has reduced current account deficit. Next paragraph. The backup to CAD. The backup to CAD is a foreign action reserve. The backup to CAD is foreign action reserve. Is foreign action reserve. After comma, with increase in CAD, with increase in CAD upon foreign action reserve, CAD upon foreign action reserve ratio,
with increase in CAD upon foreign exchange reserve ratio reflect the decreasing strength of the backup. Decreasing strength of the backup. So obviously if you have a current account deficit, it can be financed through foreign exchange reserve. Now if that CAD upon foreign exchange which is available, if that ratio is increasing, it means you have less backup. तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बैकअप कम है. और बैकअप कम होने के रीजन अब क्या हो सकते हैं? बैकअप कम होने के कुछ रीजन में अब ये इंक्लूड हो गया लाइक more depreciation of rupee in the recent past. So as rupee will depreciate, your import will be more. So you have to pay more foreign exchange in order to import same quantity. So that also weakens the foreign exchange backup. Add to that, the decreasing strength spills into depreciating the currency. Spills into depreciating the currency. The ratio increased from 10.6% in 2013-14 to 13.9% in 2018-19. And it depreciated the rupee. From about 60 rupees per dollar to 70 rupees per dollar. It depreciated the rupee from 60 rupees per dollar to 70 rupees per dollar in that period. 13-14 it used to be around 60 and 18-19 70. इसकी वजह से भी होगा और वो बोथ वे रिलेशन होंगे ना. इट विल हैव बोथ वे रिलेशनशिप, टू वे रिलेशनशिप होगा. डेप्रिसिएशन की वजह से भी आपका ये इंक्रीज होता जाएगा CAD, और इसकी वजह से भी रुपी डेप्रिसिएट होती जाएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्ट कॉस्टियर. And it disincentivizes foreign portfolio investor. Disincentivise foreign portfolio investor. It disincentivizes foreign portfolio investor. Remember, जैसे जैसे रुपी डेप्रिसिएट करता जाएगा, we will prefer to keep which asset more? Foreign asset more, because foreign currency के टर्म में रिटर्न ज्यादा हो जाएगी. तो जो foreign portfolio holder है वो they will prefer to keep their portfolio in terms of their own domestic asset, and they will not be bringing capital to this country. So this country का currency depreciate हो रहा होगा, उस country में asset जो portfolio holder होंगे, they will be reluctant to keep their asset in that currency. So if rupee is depreciating, then there will be less trust in keeping asset in terms of rupee. So in that way it disincentivizes. Next,
make this table now. Merchandise export, गुड्स का एक्सपोर्ट है ये. Merchandise export as a percentage of GDP, as a percentage of GDP you can write for 2009, 14, 19, 18, 19 and 19, 20. As a percentage of GDP was 8.6. It is trade balance, percentage trade balance. Export लिखना जस्ट वेट. 8.6 is ट्रेड बैलेंस. तो ट्रेड बैलेंस अगर कर लेंगे फिर तो डिफरेंस हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप आ जाएगा. यहाँ पे भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आप लिख रहे हैं. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज 15.7. करेक्ट दिस. 15.7% of GDP. 12.7%, 12.1% and 11.3. ठीक है, टेबल अलग अलग जगह सर्वे के अंदर गिवन है, मैं उसको एक जगह प्रेजेंट कर रहा हूँ सो दैट कन्वीनियंट होगा याद रखने के लिए. मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. देन right below that merchandise import. Merchandise import as a percentage of GDP. 24.3, 18.7, 18.9, 17.6. ठीक है. सो दिस गैप अप्रोक्सीमेटली 24 और ठीक है जो 8.6 आप लिख रहे थे ऊपर. ठीक है, वो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस था, तो ट्रेड बैलेंस हो गया तो वो नेगेटिव में आ जाएगा. इंपोर्ट 24 एंड एक्सपोर्ट 15 पॉइंट. सो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस merchandise trade balance 8.6 negative 6 6.8 6.3. ठीक है, अब रीड करोगे तो ये आपको वेरियस डिफरेंट पेजेस पे और कंसेप्ट के फॉर्म अगर लिखना है तो एक जगह सारा इंफॉर्मेशन है. तो दिस इज बेसिकली फॉर जो बीओपी बनाया था उसका जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स वाला, ओनली ये गुड्स वाला ट्रांजेक्शन. गुड्स में क्या ऐड करना है? सर्विसेज. सो ऐड नाउ सर्विसेज. Service export as a percentage of GDP is 7.7, 7.5, 7.7 and 7.4. Service import is 4.4, 4.3, 4.6, 4.6. ठीक है, इट इज ऑल्सो इनविजिबल अकाउंट. ठीक है, वो जो गुड्स है वो विजिबल कहलाता है, सर्विसेज इनविजिबल. सो
here you have written basically merchandise trade balance and the gap of these two will be net service. ठीक है, वो difference यहाँ लेना है. So it is net services. So in case of merchandise trade it was negative, deficit है वो, और in terms of services surplus हो गया. तो जब हम करंट अकाउंट लिखेंगे तो ये जो नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव में से ये पॉजिटिव माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो करंट अकाउंट की वैल्यू लिखेंगे उसमें ये दो गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, प्लस और क्या आ जाएगा, ट्रांसफर्स भी आ जाएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो जाएगी, बट वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता. तो मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिख रहे हैं. सो द गैप ऑफ 3.3 पॉजिटिव नंबर, 3.3, 3.2, 3.1, 2.9 लिखा H1 में. सो दीज टू, यहां से आप ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इन दोनों से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफर्स में भी वी कैन से दे विल बी अ सरप्लस होगा, रेमिटेंसेस ज्यादा है तो सर्विस सेक्टर सरप्लस, ट्रांसफर सरप्लस, वो दोनों ऑफसेट किसको करेंगे, जो मर्चेंडाइज में नेगेटिव है. एंड कंबाइंड वाज, यू हैव रिटन इन द फर्स्ट पार्ट, इट वाज 3.3, देन 1.4, 2.1 एंड 1.5 कंबाइंड. ठीक है, अगर इसी जगह आप लिख रहे हैं तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट लिखा था -3.3, -1.4, -2.1 एंड -1.5. ठीक है, टेबल को बार बार रिपीट करके देखिएगा सो दैट वो फिर याद हो जाता है. रेंज भी क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी और थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इन व्हाट वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड. Then for trading partner, ट्रेडिंग पार्टनर, जब आप सिंपली ट्रेड लिख रहे हैं तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इंक्लूड करके लिखा जा रहा है. अभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ट्रेडिंग पार्टनर. टॉप 3 लिख लीजिएगा. यूएसए 10.9 ओवरऑल ट्रेड, आई एम सेइंग. सो ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कंसिडर हो रहे हैं. देन विथ just wait, blue is USA, USA is 11.3, 11.3, China is 10.9, 11.3 and then 10.9, and UAE 7.3. After that Saudi Arabia 4.1. So top 4. Remember in that with USA and UAE,
With USA and UAE, India has trade surplus, and with other countries we have trade deficit. Write that information below that. With USA and UAE, with USA and UAE, India has consistently run trade surplus. India has consistently run trade surplus. India has consistently run trade surplus since 2014-15. Trade surplus since 2014-15. On the other hand, India has trade deficit continuously. India has trade deficit continuously. Trade deficit continuously since 2014-15. Since 2014-15. With respect to other major trading partner. With respect to other major trading partner. Other major trading partner, including China, Saudi Arabia, Germany, Iraq, etc. Next information separately. India had trade surplus with Hong Kong and Singapore. India had trade surplus with Hong Kong and Singapore. With Hong Kong and Singapore till 2017-18. Till 2017-18. And Singapore till 2017-18. But in 2018-19, India has trade deficit. India has trade deficit. India has trade deficit. श्रीलंका और बांग्लादेश से सरप्लस है, सर्वे में नहीं है, कंफर्म कर लेना पड़ेगा। ईयर लॉन्ग डेटा को कंपेयर कीजिएगा अगर कहीं इंफॉर्मेशन हो तो। ये ट्रेड है, ये ट्रेड है। अभी इसके बाद आप एक्सपोर्ट का सेपरेटली लिखोगे, इंपोर्ट का सेपरेट लिखिएगा। ये ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर है। नाउ राइट इट फॉर दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंक्लूड होगा किसमें? एक्सटर्नल सेक्टर में किसकी बात करनी है? हाँ उसमें होगा जब आप लास्ट वाले चैप्टर पे जाओगे। लास्ट चैप्टर विल बी इन सोशल इंडिकेटर वाला जो कंसेप्ट होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर, उसमें लास्ट वाले में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रेंड्स इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के अंदर होगा वो, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 10 में आएगा। राइट हियर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, ठीक है, वो आपने जो लिखा था वो ओवरऑल ट्रेड के लिए लिखा था। नाउ फॉर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, and two informations are available here, one for 2011-12 what was situation then, and 1920 export destination USA,
16.9 and it has increased from 11.4. So our export to USA has increased from 11.4 to 16.9. Then to UAE, 11.7 was earlier, 9.3 is now. To China, 5.9 was earlier, 5.5. ठीक है, टॉप 3-4 इंफॉर्मेशन अब रखिए, रेस्ट यू कैन इग्नोर. मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एटलीस्ट आपसे अरेंजमेंट हो सकता है. ऑर्डरिंग, अगर ऑर्डरिंग में अगर आपने 2 या 3 इंफॉर्मेशन भी टॉप किया रखे हैं तो फिर ऑप्शन से निकल जाता है. इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल टॉप 10. ठीक है, इंफॉर्मेशन आप उतना ही इनटेक लेना जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो. ठीक है, अदर नेसेसरी याद करोगे कोई फायदा नहीं होगा. जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगा उससे इंटरफेयर करेगा हमेशा. ठीक है, वो मिक्सिंग हो जाएगी ज़्यादा. आप इंफॉर्मेशन लेते समय सिर्फ जो मतलब 2-3 इंफॉर्मेशन अगर इस ऑर्डर में याद होंगे तो बाकी आप इंफॉर्मेशन से निकाल सके. विल नेवर बी दैट द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 5th कंट्री एंड 7th कंट्री, वैसे क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है, सो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन टॉप 3 इज गुड इनफ. देन राइट फॉर import origins. Import origin भी अगेन 2011-12 एंड 19-20 के लिए. Now here first will be China, 11.2 to 14.5. So our export to China has reduced, but our import from China has increased. Export to China has reduced marginally, import from China has increased. Then USA, 4.8, 7.8. So with USA export to USA export has also increased, as well as with we are trading more with USA, and that is why USA was at the top in the terms of trading partner. And UAE 7.5 and 6. ठीक है, फॉर करंट इंफॉर्मेशन आई रिमेंबर दिस साइड. टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड टॉप 3 इंपोर्ट ओरिजिन्स. Then this is basically you can say direction of trade. ये हो गया direction of trade. We are trading to with which country, and when we talk about composition, commodity wise, so it is composition of export, and again there are 2 information in fact given from 11-12 and for 2019-20. Petroleum product was 18.5 in 11-12, 13.7 out of total export.
then pearl and precious stones was 9.37. Then drug formulation and biologicals was 2.6, went up to 5. ठीक है, टॉप 3 यहाँ पे लिखेंगे. एंड फॉर इम्पोर्ट 11, 12 and 19, 20. Crude petroleum, in 11, 12 was 27.4 and it is 21. Gold 11.6 reduced to 6.4. Then petroleum product was 4.3, 5.6. ठीक है, तो ये कंपोजिशन और डायरेक्शन के लिए. तो इनिशियल पार्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन जितने भी टेबल थे वो आपने उसको क्लब करके एक जगह कर लिया. ठीक है, फाइनली वो टेबल एक कंपोजिशन ऑफ सर्विस इंपोर्ट का भी है, सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस इंपोर्ट. लाइक कंपोजिशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे गुड्स के लिए आप लिख रहे हैं तो उसमें सर्विस का शेयर. कंपोजिशन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है, सिर्फ लार्जेस्ट आइटम आइडेंटिफाई कर लीजिए. सर्विस एक्सपोर्ट का कंपोजिशन मतलब जो टोटल सर्विस है उसमें से कौन कौन से सर्विस. ऑब्वियसली बिना टेबल आप ऐसे ही बता सकते. सॉफ्टवेयर मेजर कंपोनेंट होगा ये. 13, 14 में इट वाज 45, 18, 19 40 and 19, 20 43.2, 43.12. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज है. लार्जेस्ट कंपोनेंट एटलीस्ट वो वैल्यू आप लिख सकते हो. ठीक है, सेपरेटली इंफॉर्मेशन लिख लो. सर्विस एक्सपोर्ट, रादर सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट is around 43.12%. 43.12% of total service export.
ठीक है. आफ्टर दैट शेयर है बिजनेस सर्विस का. आफ्टर दैट इट इज बिजनेस सर्विस. सेकेंड पोजीशन पे बिजनेस सर्विस. थर्ड इज फॉर ट्रैवल. थर्ड इज फॉर ट्रैवल. ये वाला लास्ट वन. 11.81, 13.67 एंड 14. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर, देन बिजनेस सर्विस एंड ट्रैवल. This is basically the composition of service export, and similarly there is a composition of service that we import. Composition of service import. So composition of service import, business service is the largest, 33.66. So add one more line. Business service import. Business service import. Business service import is around 33.66%. 33.66% of total service import. Of total service import. Of total service import. ठीक है. आफ्टर दैट इज द शेयर ऑफ ट्रैवल. सेकेंड इज ट्रैवल एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड इज ट्रैवल 19.4 and third one is transportation. Clear? Composition of service export and service import. Similarly, in terms of export, directly overall merchandise was given, but out of that merchandise export, how much is manufactured? Out of that merchandise export, how much was manufactured export? How much was the share of manufacturing export in that overall merchandise export? ठीक है. वो भी अपने रेगुलर क्लास के अंदर लिखा है. 77% अराउंड 72.8 in fact 72.8. ठीक है. राइट दैट लाइन. India's manufactured export share. India's manufactured export share. India's manufactured export share in total merchandise export. In total merchandise export. In total merchandise export is 72.8%. is 72.8%. और ये वेरी कर रहा है अराउंड 70s में 2014 ऑनवर्ड 72.8, 74.4 एंड प्रेजेंटली इट इज 72.8%. 2018. ठीक है. चैप्टर के स्टार्ट में टेबल नंबर 6 है. फॉर 1918 90 2009 to 13 66, 14 to 18 72, 17 74 and 18 72.8%. ठीक है. कॉपी नहीं किया. 2009 to 13 66.5, 14 to 18 72.8, 17 74.4 and 2018 72.8. And how much is India's share in world export? India's share in world export 1.65
1.64. Next information. India's share in world export. India's share in world export. India's share in world export is 1.64%. Is 1.64% in 2018. 1.64% in 2018, and it has reduced from 1.66 in 2017. 1.66 in 2017. Okay, this was in table number 7. This table basically shows 3 information in fact. This is 1.6% is the India share in world export. This bar is basically manufactured export, and this one is non-manufactured. So manufactured or non-manufactured का composition or share given है, and this is basically showing how much is the share of India's export in the world export. ठीक है, उसमें लास्ट में चैप्टर के एंड में सम पॉलिसी एनवायरनमेंट में और पॉलिसी लेवल चेंजेस में यू कैन मेक इंडिया एंड WTO कुछ बेसिक फैक्ट गिवन है. India hosted a WTO ministerial meeting. India hosted a WTO ministerial meeting. India hosted a WTO ministerial meeting of trade ministers in May 2019. In May 2019 in New Delhi, wherein 16 developing and 6 least developed countries, 16 developing and 6 least developed countries participated. Next sentence. The meeting culminated in an outcome document. The meeting culminated in an outcome document. Which lays out priorities for developing countries, in various areas. ठीक है, next. The 12th ministerial conference of WTO, मतलब वो हर 2 साल के बाद होती है मीटिंग. 12th ministerial conference, since its inception in 1995, every 2 years there will be a ministerial conference for further negotiations. So 12th is scheduled and scheduled to be held in June 2020. In June 2020. Country? Kazakhstan. June 2020.
in Kazakhstan? Nur Sultan, Kazakhstan. Next, India ratified WTO agreement on trade facilitation. India ratified WTO agreement on trade facilitation in April 2016. WTO agreement on trade facilitation in 2016 and subsequently constituted in April 2016 and subsequently constituted National Committee on Trade Facilitation, NCTF, National Committee on Trade Facilitation, subsequently constituted National Committee on Trade Facilitation, National Committee on Trade Facilitation, and National Trade Facilitation Action Plan and National Trade Facilitation Action Plan, National Trade Facilitation Action Plan was released in July 2017. ठीक है, और फैसिलिटेशन प्रोग्राम का आउटकम ये दैट इंडिया रैंकिंग हैज इम्प्रूव फ्रॉम 143 to 68. 143 was ranking in 16, 68 is ranking in 2019 based upon trading across border. And this is a part of the ease of doing business released by World Bank. So trade has to be facilitated, and in order to facilitate that trade, various schemes and measures has been taken. ठीक है, अदर पार्ट चैप्टर के एंड में फर्दर फैसिलिटेशन प्रोग्राम के अलावा एक्सटर्नल सेक्टर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल डेट. तो एक्सटर्नल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नल डेट as a percentage of GDP is how much? External debt is not वो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट था जो पब्लिक फाइनेंस में लिखा था, दैट वाज 46 or 48%. दैट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्विंग. दिस इज एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल बॉर्विंग. एक्सटर्नल डेट इज 20.1%. एक्सटर्नल डेट अगेन इफ यू सेम इंफॉर्मेशन अगर आप 2009 to 14, 14 to 19, 18, 19 and 19, 20. External debt was 23.9, 19.7, 19.8 and 20.1.
And for external liability, when I say external liability, then it includes debt and equity. External liability as a percentage of GDP was 42.2, 38.2, 38.4 and 40.8. ठीक है, और जहां से हमने बिगिन किया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री के लिए अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, एनेक्शन में इन टर्म्स ऑफ फॉर इंडिया फॉर 2019, 20, 14, 15 ये इंफॉर्मेशन कंबाइन करके गिवन है. बट करंट अकाउंट में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो ट्रेड बैलेंस हो गया, और ये सर्विसेज हो जाएंगे. सर्विसेज के बाद फिर ट्रांसफर्स आ जाएंगे. तो उस फॉर्म में ये करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा हमारा. करंट अकाउंट बैलेंस के बाद कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन हो गया. आप एक बार जैसे उसको सी कर लेंगे, जैसे व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट एंड व्हाट आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट. अगेन आई रिपीट, गुड्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. रेस्ट यू कैन से इन द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में एक्सटर्नल असिस्टेंस हो गया, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग हो जाएगी, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, बैंकिंग कैपिटल है, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट है, एफडीआई है, पोर्टफोलियो है, अदर फ्लोज है, एंड एरर्स एंड ओमिशंस जस्ट टू मेक अ बैलेंस. सो इन अकाउंटिंग सिंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस. ठीक है, तो इस टेबल का ज्यादा यूज नहीं है, वो इन बिटवीन आपने उस फॉर्म में कर रखा है. सो नाउ वी हैव डन बेसिकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स. ठीक है, सो दिस फर्स्ट पेज इज नाउ ओवर. कंटेंट में यू हैव डन इन द फर्स्ट क्लास स्टेट ऑफ इकोनॉमी, सेकंड वाज फिस्कल डेवलपमेंट एंड पार्टली वी इंट्रोड्यूस द मॉनेटरी मैनेजमेंट. सो इन दिस क्लास वी हैव डन मॉनेटरी मैनेजमेंट कंप्लीट एंड दिस एक्सटर्नल सेक्टर. सो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, जहाँ कंटेंट भी ज्यादा होगा और क्वेश्चन भी ज्यादातर आपको पब्लिक फाइनेंस से, मॉनेटरी मैनेजमेंट से, एक्सटर्नल सेक्टर से ज्यादा मिलते हैं. After that will be the sectoral description. Sectoral like for agriculture, for industry, for social sector, but that will take less time. ठीक है, अभी तक जो कर रखा था उसमें टाइम कंज्यूमिंग था. इसके बाद जो चैप्टर्स हो जाएंगे लाइक प्राइस एंड इन्फ्लेशन, बट प्राइस एंड इन्फ्लेशन विल बी हैविंग लेस इंफॉर्मेशन. One will be chapter price and inflation, sustainable development and climate change, then agriculture and food management, industry and manufacturing. Then one important we can say will be the social sector. ठीक है, वो लास्ट वाला चैप्टर होगा, इंपॉर्टेंट होगा. सो 4 we have done, बट 4 में जितना टाइम लगा है उससे कम टाइम में रिमेनिंग 6 हो जाता. ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर थे वो यहाँ कर दिए. यहाँ से मंडे कंटिन्यू.